या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। So after having a small prayer, as you all know that on the second day of workshop on problem solving in mathematics, today's our expert is Dr. Hiten Kanani. So before starting our session, let me give you a brief introduction of Dr. Kanani. Dr. Kanani is working as an assistant professor at Baudin Science College, Junagadh. He has completed his PhD from Sardar Patel University. I request all of the participants to kindly mute their mics. So Dr. Kanani has completed his PhD under the guidance of Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, and his expertise is in the functional analysis and Banach algebra. And as you all know that today he is going to discuss about real analysis. Dr. Kanani has published 7 research papers in the reputed international journals, as well as he has presented 7 research papers. So on behalf of Dr. Subhash Science College, I welcome Dr. Hiten Kanani. I also welcome all the participants in this second day of workshop on problem solving in mathematics. So now I hand over the session to Dr. Hiten Kanani. Welcome, sir, and I request you to start your session. Thank you, Prem. Good morning, all. Am I audible? Yes, yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, thank you. Okay. So this is a workshop on problem solving, and particular, is there anyone who is not comfortable with Gujarati? Or Prem, is there any participant from outstate? No. Mostly are from Gujarat only. Okay. So આપણે લેક્ચરનું નોર્મલી ગુજલીશ માં આપણે કન્વર્ઝેશન કરીશું. Yes, if you are preparing, બે જ વાતો કહેવી છે મારે કે if you are preparing for CSIR NET JRF, then you should go for first of all તમે તેનો આ લોકોને એન્ટર કરવાના છે. પ્રેમ, Sorry, Hiten bhai, તમારો અવાજ વચ્ચે કપાઈ ગયો. there are some people in waiting. Yes, that I will manage. Okay. Yes, so if you are preparing for CSIR NET, આમ તો તમને લોકોને ખ્યાલ જ હોય કે તમે એના માટે પ્રિપેર કરો છો તો કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરવી. But you should start with the syllabus તમે જુઓ, there are 3 or 4 units. એમાં કયા યુનિટ્સમાં તમે કમ્ફર્ટેબલ છો, કયા યુનિટનું કેટલું વેઇટેજ છે, એ પ્રમાણે જો થોડુંક પ્લાનિંગ થી પ્રિપરેશન કરો તો એક્ઝામ ક્લિયર કરવી બહુ ઈઝી છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ મચ ડિફિકલ્ટ. ખાસ કરીને જો એનાલિસિસ છે કે કયા યુનિટનું કેટલું વેઇટેજ છે અને તમારે કયા યુનિટમાં કેટલું તમારા માટે પ્લસ પોઈન્ટ કયા યુનિટમાં છે, તમને કયું એલ્જીબ્રા વધારે ફાવે છે, એનાલિસિસ વધારે ફાવે છે, રિયલ એનાલિસિસ વધારે ફાવે છે, તમારો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ કયો છે, તમારો વીક પોર્શન કયો છે, એ પ્રમાણે જો થોડુંક તમે એનાલિસિસ કરો અને પ્રિપેર કરો તો એક્ઝામ ક્લિયર કરવી બહુ ઈઝી છે. એન્ડ નંબર 2, ઘણીવાર એવું બને કે આપણી સામે પ્રોબ્લેમ્સ આવે તો પ્રોબ્લેમ તો આપણે સોલ્વ કરી દઈએ, બટ ઇટ મે ટેક 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes or half an hour. હાફ એન અવરમાં જો કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો હોય તો ઇટ ઇઝ ગુડ કે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય છે,
બટ જ્યારે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી તમે જુઓ છો ત્યારે એ હાફ એન અવર માં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય તેનો મિનિંગ નથી, બીકોઝ વી નો દેટ વી હેવ ઓનલી 3 hours and there are lots of questions, right? So within 4 to 5 minutes માં જો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય તો એનો મતલબ છે, otherwise it has no meaning. So you should prepare for that કે મિનિમમ ટાઈમમાં તમે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો, રાઈટ? You should must have that type of techniques or that type of practice, અને પ્રેક્ટિસ કરવાથી આવી જાય. Okay, let us start our session. I think problems તમને મળી ગયા હશે, right? Yes, we have said. Yes, sir. Okay. Give me just 1 minute. I want to set here something. Yes, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, I am going to use this board work. Just a minute, huh? Okay. Hello. Can you read this? Yes, sir. Okay. Okay. So we are going to discuss sequence and series of functions, right? So let us start with sequence of functions. I think it is visible, right? Yes. I think it is clear now, right? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. So let me ask you first of all, what do you mean by a sequence? I'm not talking about sequence of function. I'm just talking about sequence. What do you mean by a sequence? Sequence बोलो तो आपको दिमाग में क्या आता है? आप क्या समझते हो? What is the meaning of sequence? See, participants can unmute their mics and give the answer to the expert. Yes. A function from N to R. It's called real Yes, sequence. function from N to R, right? Okay. Is it necessary that it is a function from N to R? Let me take, if I take a function from N to C, can you say that it is a sequence? સર n to x આવશે. Yes. N to x. Okay, let me write it down. Sequence is nothing but a function. We did not x for this function, right? Usually we use f for functions, but when we are talking about sequence, जब हम sequence की बात करेंगे, we will use x. Okay.
A function from n to x is called sequence of elements of x, right? If x is equal to r, then it will be a sequence of real numbers. If x is equal to say z, then it will be a sequence of integers. If x is equal to say c, then it will be a sequence of complex number, right? It can be any set. If it is a say x is equal to r2, then it will be a sequence in r2, right? Its domain is fixed. सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या फिक्स्ड है, डोमेन फिक्स्ड है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 का आंसर आपको मिलेगा कुछ, x इज इक्वल टू 2 का आंसर कुछ मिलेगा, at 3 आपको कोई आंसर मिलेगा, and so on. At x is equal to n, you will get some answer, right? Instead of writing like this, we will write like this, x1, x2. For the sake of convenience, we are using these notations. These are just notations, but what is the meaning of this? This is the meaning. It means that value at n of x from, if codomain is R, then it will be a sequence of reals. If codomain is Z, then it will be a sequence of integers. It can be a sequence of say R2. It can be a sequence of, let me take MNR. It can be a sequence of matrices also, right? So if I consider this set, let me write like this: x raised to y. What is x raised to y? X raised to y is nothing but set of all functions. Okay, let me write like this: f from x to y, where f is a function. Or this is nothing but set of all functions from x to y, right? So if we take a function from n to x raised to y, this is not standard notation. This is not standard notation. Many people use to write like this also: yx. Yx means what? This is set of all functions from x to y. Some people used to write like this: x raised to y. It means this is set of all functions from x to y. This is not standard, but we can use this, right? So if we consider this type of sequence, then what will be image? X of 1 will be some function, right? It will be a function from x to y. Let me call it f1. x2, it will be a sum function from x to y. x3 will be a sum function from x to y, right? So in general, we are going to discuss here a function from n to, let me write x is equal to r, y is equal to r, then it will be r raised to r. What is r raised to r? This is set of all functions from r to r. Set of all functions from r to r, right? So if x1 is a function, x2 is a function, x3 is a function, in general, fn is a function for each n, then this sequence we call sequence of functions. Let me write properly. So let fn, let A be a non-empty subset of R. Let A be any non-empty subset of R, and fn be a function from A to R. Fn be a function for each n. Means f1 is a function from A to R, f2 is a function from A to R, f3 is a function from A to R, f100 is a function from A to R. Domain of all these functions is fixed. Then the sequence of functions, then fn is called sequence of functions defined on A. A is any non-empty set, right? Hello, is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So, if domain of each function is fixed, we are considering only a real valued functions, right? It can be a sequence of complex valued functions also. It can be a functions of some matrix valued functions also. यहाँ पर आप अगर ये सेट चेंज कर दो कोडोमेन, तो इसके हिसाब से चेंज होता जाएगा. लेकिन we are going to focus only on this. Okay. Let us see few examples. Let me write example number 1.
if I define like this, fnx is equal to, let me take x raised to n, where x belongs to, let me take open interval minus 1 1, or let me take close interval minus 1 1, no problem. Okay, then this will be a sequence of function. What will be first function? If you take n is equal to 1, then f1x will be this function. f1x is equal to x, identity function, right? What is f2x? If you take n is equal to 2, it will be x square. So first function is identity function, second function is x square, third function f3x is equal to x cube, and so on, right? So you will get a sequence of functions like this, where x belongs to this interval. Okay. So now if you put particular value of x, you will get for each x, you will get a sequence of real numbers. For example, let me take x is equal to say -1. Then what will be this sequence? Fn of -1. This will be -1 raised to n. What I'm doing? I'm fixing a x. What I'm saying, if Fn is a sequence of real valued functions, then for each x, fnx will be a sequence of real numbers, because fnx will be a real number. x की अगर आप particular value रखेंगे, n यहाँ पर 2 variable है. When you are talking about sequence, then n is the variable. हम जब sequence की बात कर रहे हैं तो n variable है. जब हम function की बात कर रहे हैं तो x is the variable, right? So if I take x is equal to -1, fn of -1 will be what? -1 raised to n, right? So what will be f1? f1 of -1 will be -1 raised to 1. It is -1. This is constant function -1. Sorry, f1 of -1 is -1. Value of f1. Value of f2 at -1, it will be what? +1. Value of f3 at -1, it will be -1 cube, means -1, and so on. So f4 of -1 will be +1. In general, fn of -1 will be -1 whenever n is odd, and it will be +1 whenever n is even, right? So if you substitute x is equal to -1, you will get a sequence of real numbers, right? So for each real x, you will get a sequence of real numbers. Okay, let me take x is equal to 0. If we take x is equal to 0, what will be fnx? Fnx will be fn0. Fn0 is 0 raised to n. This is 0 for all n. So this is a constant sequence, means f1x is 0, f2 0, again 0, f3 0, again 0, and so on, right? Okay, let us take x is equal to 1, or let me take 1 by 2. If we take x is equal to 1 by 2, what it will be? It will be fnx is equal to x raised to n. X is equal to 1 by 2. So 1 by 2 raised to n, and this sequence will be of this type. What? f1 is 1 by 2, f2 is 1 by 2 square, 1 by 2 cube, 1 by 2 raised to 4, and so on, right? Okay, if we take x is equal to 1, what we get? fn1 is equal to 1 raised to n, that is 1, 1, 1, 1, 1, constant sequence 1. Means for each real x, for each x, fnx, I'm talking about fnx. See, जब मैं फंक्शन की बात करूंगा, I will use only fn. fn means मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ. fnx means फंक्शन की x की आगे की जो वैल्यू आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ, right? I'm talking about fnx means sequence of real numbers. So if you take x is equal to 1, it will be a constant sequence. If you take x is equal to 1 by 2, this will be geometric progression. If you take x is equal to 0, this is 0. If you take x is equal to -1, it is oscillating sequence. So we can see from here that if we take a sequence of functions, then we have two options. Which two options? For some values of x, fnx may be convergent. See, this is a constant sequence, right? So for x is equal to 1, fnx is convergent. fn1 is convergent. For x is equal to 1 by 2, we know that this is in geometric progression and r is less than 1, so it is also convergent. So for this value of x, it is also convergent. So this is convergent. This is also convergent. What about this? This is again a constant sequence, so this is also convergent. Means for x is equal to 0, fnx is convergent. For x is equal to 1 by 2, fnx is
is convergent. For x is equal to 1, fnx is convergent. For x is equal to say -1, this is oscillating sequence. This is not convergent. Right. Okay, let me take here from x belongs to -1 to say infinity. Or x belongs to r. Let me take x belongs to r. So for x is equal to 2, what you will get is this. Let me remove this. For x is equal to 2, you will get fn x is equal to 2 raised to n. This sequence will be of this form: 2, 2 squared, 2 cubed, 2 raised to n, and so on, right? So that this is divergent. So it may happen that for some values of x, this sequence is convergent. For some values of x, this sequence is divergent. For some values of x, fn x is oscillating finitely. For some values of x, fn x is oscillating infinitely. कैसा भी nature आ सकता है, right? It's not always necessary that for each value of f, fn x is convergent. Okay. So we are interested in trying to find out all the sequences which are convergent for all the values of x in the domain. डोमेन में से x की जितनी भी वैल्यू आपको मिल रही है वो हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज हो रही है या नहीं हो रही. Okay, so let us discuss about this. So this was the only, we have seen only one example, fnx is equal to x plus 2n. Rest of the examples we will see later. Okay, so this is, let me say that pointwise, let me define pointwise convergence. Pointwise convergence. So let fn be a sequence of functions defined on a set A. fn is a sequence of functions defined on a set A. Means f1 is a function from A to R, f2 is a function from A to R, f3 is a function from A to R, and so on. If for each x in A is the domain. For each x in A, the sequence fn x, the sequence fn x converges to say some function, converges to fx. Say, of course, यहाँ पर x की वैल्यू के ऊपर जो लिमिट आएगी it will be dependent on value of x. So I am writing here fx. जैसे हमने यहाँ पर देखा, आपने x is equal to 0 लिया तो constant sequence 0, वो 0 पर कन्वर्ट हो रही थी. x is equal to 1 लिया तो 1 raised to n, it was constant sequence 1 1 1 1 1, वो 1 पे कन्वर्ट हो रही थी. तो of course जो लिमिट आएगी वो x के ऊपर डिपेंडेंट आएगी, right? So I cannot write like only fn x converges to L. For each x, जैसे आप x change करोगे, limit will be changed. So I am writing here fx converges to fx. Then, if for each x in x, the sequence converges to fx, then we say that fx is pointwise. Then we say that fx is the pointwise limit of the sequence fn. Or we can say that the sequence fn x converges to fx pointwise, and we write like this: fx is equal to limit n tends to infinity fn x, right? In that case, we write like this: fx is equal to limit n tends to infinity fn x. Okay, इसका एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? और इक्विवेलेंटली we say that a sequence fn x. Okay, हमें पता है if I want to say that xn converges to L, I'm talking about sequence of real numbers now. If I want to say that xn converges to L, what does it mean? This is if and only for each epsilon positive, you can find some n naught such that what happens? Difference between these two can be made arbitrarily small after that n naught, after some step.
then we say that xn converges to L. So you can see this fn as an xn, this is our xn, this is our L. बस यहाँ पर replace कर दो, for each x this is the sequence of real numbers, right? So what we will write a sequence fn x converges to fx pointwise on a set A if what? For each x this should happen. For each x in A क्या होना चाहिए? For given epsilon there exists some n not in n such that what happen? Modulus of xn, in place of xn we will write fn x minus fx should be less than epsilon for all n greater or equal n. Of course, one thing here you should note is that कि यहाँ पर जो n नॉट मिलेगा वो n नॉट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स फॉर ईच एप्सिलॉन इट विल बी चेंज. एप्सिलॉन जैसे आप स्मॉल करोगे ये n नॉट बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा. एंड फॉर ईच x x के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा. जैसे आप कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस आ रहा है ना. If you define a function is continuous at some point, then for given epsilon there exists some delta, something happen, right? वहां पर जो डेल्टा मिल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन एंड दैट पॉइंट जहां पर आप कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हो. लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होगा? इफ यू से दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर exists delta, something happen, but that delta will depend only on epsilon, not on that point, right? Okay. So here, this fx is pointwise limit of fn x. Let us see one example, one or two examples, then we will go ahead for uniform convergence, right? These are standard definitions. You can find it in any reference book of analysis. And in fact, we are not going to use this definition to prove any type of convergence. We are not going to use this definition क्योंकि अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से प्रूव करने जाओगे एग्जाम में, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम में, तो इट विल टेक वेरी मच टाइम. सो लेट मी टेक, लेट अस कंसीडर fnx. fnx is equal to वही एग्जांपल ले रहे हैं, x raised to n x belongs to, let me take close interval 0 1, right? So if I take x is equal to 0, what will be this sequence? fn0 is equal to 0 raised to n. This is equal to 0 for all n, right? So this is the sequence, constant sequence. f10 is 0, f20 is 0, f3 is 0 is 0, f40 is 0. So this is the constant sequence 0. So you convert this to 0 means x is equal to 0. Limit क्या आएगी? 0 आएगी. Okay, domain में से मैं x is equal to 1 ले रहा हूँ. If you take x is equal to 1, what will be sequence 1 raised to n? This is again a constant sequence. f11 is 1, second term is 1, third term is 1, fourth term is 1. This is constant sequence 1, so it will convert this to 1. This is true for all n, so its limit is 1, right? Now let me take any number a in between 0 and 1. I'm not taking 0 and 1. इसके बीच में से कोई भी नंबर ले रहा हूँ a. If a is any real number which is strictly greater than 0 and less than 1, then a raised to n. This is geometric progression, right? You can see like this: a n is equal to 2 रखो, you will get a square, a cube, a raised to 4, and so on. And we know that if mod r is strictly less than 1, then this geometric progression converges to 0, right? So 0 और 1, सॉरी 1 के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे आप तो उसकी लिमिट 0 आएगी. 1 लोगे तो 1 आएगी. इट मींस इसका जो लिमिटिंग फंक्शन आ रहा है fx, if I want to write pointwise limit fx, this is limit n tends to infinity fnx. This is what? This is limit n tends to infinity. What? X raised to n, and we have two options here. If x is equal to 1, limit will be 1. If x is not 1, this is 0. समझ में आ रहा है? Means this function fx is the pointwise limit of this sequence. Okay, let me change little bit. What I want to
take is. Okay. Next example ले लेते हैं, no problem. Next example f(x) is equal to, let me take, क्या लेंगे, ऐसा कुछ लेंगे. I want to split this function. Say n upon x. Yes, if x belongs to what? 1 ले रहे हैं when x is equal to 0. 0 के ऊपर मैं 1 ले रहा हूँ. 1 by n to 1, 1 by n इस तरफ आता जाएगा ना. nx लेना तो nx. If x belongs to, let me write 1 upon n plus 1 to 1. n is equal to 1 रखोगे तो 1 by 2 to 1. Okay, हो गया. And otherwise, fn is the function from closed interval 0 1 to 1. We are defining a sequence fn from closed interval 0 1 to 1. Okay, कैसे होगा? n is equal to 1 रखो. So first function will be what? f(x), n is equal to 1 रखो तो x, n is equal to 1 रखो तो कहाँ पर 1 by 2 से 1 में y is equal to x का फंक्शन है. एंड यहाँ पर 0 ले लो, नो प्रॉब्लम. 0 कहाँ पर? तो 0 से 1 by 2 ओपन में, राइट. This is f(x). What is f(x)? f(x) will be this function. It will be 2x when x belongs to where? 1 upon 3 to 1. 1 upon n plus 1 to 1 and 0 otherwise. Otherwise means इसके अलावा कहाँ पर आएगा? x belongs to say 0 to open 1 by 3. If we take f(3x), this will be what? 3x and 0 what? X belongs to say 1 by 4 to 1 and x belongs to 0 to open 1 by 4 and so on. Okay. So let us try to find out pointwise limit of. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो. Let us try to draw the graph of these functions. So it is 0 somewhere here, it is 1 here, it will be 1 by 2 here, right? So what is first function f(x) says that 1 by 2 से 1 में, 1 by 2 से 1 में आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y is equal to x का ग्राफ ड्रॉ करना है. fx is equal to x means y is equal to x. y is equal to x का ग्राफ ऐसे आएगा, लेकिन हमें ड्रॉ करना है ओनली यहाँ पर, राइट. 1 by 2 से 1 में, और 0 से 1 by 2 में क्या हो गया? ये 0. So this is the graph of f(x), right? This is f(x). What is f(x)? f(x) में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 2x का. y is equal to 2x. स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा. इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, राइट. इंक्रीज होगा. और कहाँ पर है? 1 by 3 से 1 में. Say it is 1 by 3 somewhere here. So 1 by 3 से 1 में y is equal to 2x का ग्राफ. x is equal to आप 1 by 3 रखोगे, you will get 2 by 3. It will be somewhere here. And x is equal to 1 रखोगे, ये 2 तक जाएगा यहाँ पर, इससे ऊपर थोड़ा इंक्रीज होगा, राइट. और then 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा. इससे आगे जाओ, क्या? 1 by 4 से 1, 1 by 4 will be somewhere here. 1 by 4 से 1 में क्या ड्रॉ करना है? 3x का ग्राफ. 1 by 4 से 1 में इसका स्लोप और बढ़ेगा. इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 3 है, 4 है, ऐसे 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 जाएगा. And you can say this function, in fact this is not convergent. If you try to find limit n tends to infinity f(x), this will be what? This will be limit n tends to infinity. What is f(x)? Say if you take n tends to infinity, और यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर आपका x 0 है, सी 0 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा. कोई भी फंक्शन ले लो, एक इस तरफ से ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, राइट. 0 के आसपास वो 0 हो जाएगा. 1 by 5 से इसमें 0, then 1 by 6 से इसमें 0, 1 by 7 से इसमें 0. Means x is equal to 0 है, you will get 0. So let me write directly. This limit will be what? This is 0 if x is equal to 0. इसको n tends to infinity करो तो ओपन 0 1 जैसा आएगा, राइट. 0 के ऊपर वो 0 हो जाएगा. And otherwise x 0 है तो 0 आएगा, x नॉन 0 है तो क्या आएगा?
x अगर नॉन जीरो है, n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे मींस n लार्ज होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस तरफ आ जाएगा, राइट? इसमें आपको देखना है। अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, योर x इज फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर, so it will go to infinity if x is non-zero. Means this is not divergent. Sorry, this is not convergent for any non-zero. It is convergent only for x is equal to 0, right? So we have seen few, I mean two examples. एक ऐसी के जो डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज हो रही है, एक ऐसी सीक्वेंस जो कुछ ही पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो we say that this sequence is not convergent, right? This is divergent. और अगर डाइवर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जन या यूनिफॉर्म कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। अब let's go for uniform convergence now, then we will go for examples. So I'm just going to state this definition: uniform convergence. A sequence Fn of functions defined on a set A, defined on a set A, is said to converge uniformly on a set A if क्या हो रहा, if this happen for each epsilon greater than 0. Now I'm not writing for each x in x, right? For each epsilon greater than 0, there exists some n naught in n such that modulus of fnx minus fx is less than epsilon for all n and for all x. See, this is the difference. This should happen for all x also. अगर ये हो रहा है तो we say that sequence converges uniformly. जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एंड सिंपल कंटिन्यूटी में जो डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस इज हियर, राइट? ओके ओके, तो अब हमें अगर चेक करना है, से ये जो यूनिफॉर्म कन्वर्ज ऐसा है, नेचुरल क्वेश्चन इज दिस वन कि fn कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज, राइट? कोई सीक्वेंस है, कोई फंक्शन के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रही है, fn converges to some function g से यूनिफॉर्म, तो ये g जो है वो f ही होना चाहिए या दोनों सेम ही होना चाहिए या दे कैन बी डिफरेंट। ऐसा हो सकता है कि पॉइंट वाइज किसी एक फंक्शन पे कन्वर्ज हो रही हो और यूनिफॉर्मली किसी दूसरे फंक्शन पर जा रही हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन प्रूव दिस from here. You can see that uniform convergence is a strong condition. This should happen for all n and for all x, means for each x this will also happen. So uniform convergence implies pointwise convergence, right? This is a stronger condition. I'm not going to write this. This is a simple remark. Every uniformly convergent sequence is pointwise convergent. And दोनों की लिमिट सेम ही आएगी अगर है तो। Now question is कि अगर हमें फंक्शन दिया गया है, sequence of functions दी गई है, and we want to check whether this sequence converges uniformly or not. So this is our main tool. This is called MN test for uniform convergence of sequence of functions. This is the main tool we are going to use. Okay, what it says? Let Fn be a sequence of functions converges. Okay, sequence of functions defined on a set X. Defined on a set X. Then Fn converges uniformly to a function f
on this set A, if and only if I am writing this double F, right? दिख रहा है आपको? Yes. What does this mean? If and only means अगर ये हो रहा है तो you can say that this convergence is uniform convergence. अगर ये नहीं हो रहा है तो आप मना भी कर सकते हो कि this convergence cannot be uniform convergence. If and only if the sequence Mn is equal to what? Mn is equal to supremum of modulus of fnx minus fn. सुप्रीमम कहाँ लेना है आपको? सुप्रीमम लेना है ऑन x. जब आप mn कैलकुलेट कर रहे हो तब n इज फिक्स्ड, आपको क्या करना है? x के ऊपर सुप्रीमम लेना है इसको. तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगी mn. फॉर n is equal to 1 you will get m1, n is equal to 2 you will get m2, n is equal to 3 you will get m3 and so on. This will be a sequence of real numbers, right? If the sequence mn goes to 0 as n tends to infinity, this should goes to 0. अगर ये 0 पर जा रहा है तो you can say that this convergence is uniform convergence. अगर ये नहीं जा रहा है तो you can say that this convergence cannot be uniform convergence, right? Okay, so let us see examples. उससे पहले एक दो रिजल्ट्स जो आपको याद होंगे, let us discuss it quickly. कि अगर मुझे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिया गया है, एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस रिजल्ट इन द लास्ट सेशन मींस आज जो हमारा 2 आवर्स का सेशन है उसमें लास्ट में वी विल डिस्कस दिस, बट इसका भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. लेट these are one way results. fn be a sequence of functions converges uniformly to f. अब जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आएगा आई विल राइट लाइक दिस fn डबल एरो. दिस इज नॉट स्टैंडर्ड नोटेशन, मींस डबल एरो मींस इट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सिंगल एरो मींस इट इज पॉइंटवाइज कन्वर्जेंस, राइट? ये टाइम बचाने के लिए वी विल यूज दिस. सो सपोज fn converges uniformly to f on a, then what we can say, number 1, अगर if each fn is bounded, हर एक फंक्शन यहाँ का बाउंडेड है, then f is also bounded on, means बाउंडेड फंक्शंस की सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो रही है तो उसका जो लिमिटिंग फंक्शन आएगा वो भी बाउंडेड आएगा. का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो से converse is not true, this is not true, this is not true means what? अगर sequence of bounded functions दी गई है और pointwise limit b bounded function आया तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि this convergence must be uniform convergence, ऐसा नहीं हो सकता. क्या कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो बाउंडेड फंक्शन की सीक्वेंस बाउंडेड फंक्शन पर कन्वर्ज होनी चाहिए. इट मींस इफ यू आर गिवन अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन एंड लिमिटिंग फंक्शन इज अनबाउंडेड, if each fn is bounded but limiting function is unbounded, then you can definitely say that this convergence cannot be uniform convergence. इस रिजल्ट का यूज कहां कर सकते हो? मना करने में. आपको बोल रहा है कि fn f के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं हो रही है, then only you can use this. इस रिजल्ट का यूज करके you cannot say that this convergence is uniform convergence. अगर ऐसा हो रहा है तो it doesn't mean कि ये convergence uniform convergence है. Similarly, if each fn is continuous on it, then f is also continuous. अब ऐसा बोलते हैं कि यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ continuous function is again continuous. Uniform limit है तो it has to be continuous. Again it is one way result, means if each fn is continuous, आपने देखा कि pointwise limit continuous आ रही है तो आपके पास कुछ नहीं. You cannot say that this convergence is uniform convergence or not. But अगर हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, सीक्वेंस का fn is continuous but limiting function discontinuous है, तो you can definitely say that this convergence cannot be uniform convergence, right? Again this you can use only in saying that this is not uniform convergence. इसका यूज करके आप इतना ही बोल सकते हो कि ये convergence uniform convergence नहीं. कब? अगर each fn continuous है और f discontinuous है तो. लेकिन लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूअस आया तो
No conclusion. There is no conclusion. Right. Number 3. See, ये क्या बोल रहा है कि Fn की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप F के ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में. So number 3, ये बाउंडेड वाला थोड़ा वीक था, हमने थोड़ा स्ट्रांग किया, कंटिन्यूअस किया और थोड़ा स्ट्रांग करते हैं कि if Hn Fn is uniformly continuous. यहाँ पर जो फंक्शन है Fn F1 is uniformly continuous, F2 is uniformly continuous, F3, F100, F1000, F10000, F1 lakh, every function is uniformly continuous and it converges to F uniformly, then F is also uniformly continuous. See, कभी-कभी डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपको 4 ऑप्शंस में दे देते हैं, which of the following is true, तो डायरेक्टली you can see कंटिन्यूटी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी हो रही है. नंबर 4, if each Fn is differentiable on a, ये कंटिन्यूअस है, Fn converges to F यूनिफॉर्म है, तो we can say that F is differentiable on a, ऐसा होना चाहिए, but unfortunately this is not true. This may not be true. क्या होना चाहिए? If each Fn is differentiable on it and Fn dash जो differentiation की जो sequence है Fn dash converges uniformly to some function, then G is equal to F dash. See, this condition is important. Only Fn differentiable है, uniform convergence है, तो F may not be differentiable. या तो फिर ऐसा बने कि Fn converges to F uniformly है, लेकिन Fn dash converge ही ना हो रही है. We will see this type of examples in the class, right? ऐसा बने कि Fn dash converge ही ना हो रही हो, तो उसकी लिमिट के बारे में बात ही नहीं कर सकते. लेकिन अगर Fn dash converge हो रही हो, तो कहाँ पर converge होगी? वो F dash पे converge. This type of results are there for integration also. We are not going to discuss this now. Let us check your problem set. आपको जो प्रॉब्लम सेट दिया गया है, I will try के 2 hours में जितना आप मैक्सिमम कर सके. ये सिर्फ एक टेक्निक एक बार आपको पता चल गई तो it is very much simple to check whether this convergence is uniform convergence or not, right? Okay, so let us start with first example. हमने जो सीक्वेंस ले ली मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा. Okay, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या है. I'm taking f of x, fn x is equal to x raised to n. I want to check whether this converges uniformly on closed interval 0 1 or not, right? Okay, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करनी है, राइट? ओके, so let us try to find out fx. Fx is what? Limit n tends to infinity. Fn x. This we have evaluated. This is x raised to n, and we know that if x is equal to 0, then this will be 0. If x is in between 0 and 1, then also it is 0. But if x is equal to 1, this will be 1. This limit will be 1. So we can see here each fn is a continuous function, right? Hello? Can you say this? Fn is a continuous function. Are you there? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. On closed interval 0 1. Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Right. Simple. It is a polynomial function. F1x is x, F2x is x square. For each n, it is a polynomial of n degree, right? So it is a continuous function on closed interval 0. What do you mean by continuous on closed interval 0 1? Means it is continuous on open interval 0 1. Then right hand side continuity on 0 and left hand side continuity on 1. Means closed interval ab के ऊपर कोई function continuous आपको बोलना है. F is, if I want to say that f is continuous on closed ab, तो क्या होना चाहिए?
f should be continuous on ओपन एबी, क्योंकि ओपन एबी में से कोई भी पॉइंट लोगे तो आप यहाँ पर सी है, यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की बात कर सकते हो, राइट? बट इफ यू वांट टू से दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट a क्लोज इंटरवल, देन व्हाट? This limit must exist. This limit what? X tends to a plus fx, this should be f of a, and limit x tends to b minus fx, this should be f of b, right? f should be continuous on open ab, a के ऊपर राइट हैंड साइड लिमिट एंड f of a की वैल्यू सेम आनी चाहिए, a के ऊपर लेफ्ट हैंड एंड ये सेम आना चाहिए. Yes. So what can you say about this function? Is this continuous on closed interval 0 1? fx is equal to 0. This is the graph. 0 से 1 में क्या है? 0 है. 1 के ऊपर क्या है? 1. This is constant function 0. जैसा आप 1 रखोगे it will be 1, right? I'm talking about this limiting function. So if you take limit x tends to 1 minus fx, 1 minus means इस तरफ से आप जा रहे हो 1 के ऊपर, यहाँ तो कांस्टेंट फंक्शन है 0 0 0 0 0, so this limit will be 0 and this is not equal to f of 1, right? Because f of 1 तो 1 है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, it means each fn is continuous on clause 0 1, but f is not continuous, so this convergence cannot be uniform convergence, right? So here each fn is continuous on clause 0 1, but f is discontinuous, in particular at 1, and therefore fn cannot converge uniformly to f on closed interval 0 1, right? Is this clear? Hello? Yes, sir. Clear. Let's check through MN test. What is our MN test? MN test says that we have to check the supremum over closed interval 0 1. What supremum? fnx minus fx, right? इसका सुप्रीमम हमें देखना है. हमें पता है कि ये fx है, ये 0 से 1 में 0 है, x equal to 1 के लिए 1 है, so I have to find this supremum modulus of fnx. कहां पर x belongs to close interval 0 open 1, क्योंकि fx की वैल्यू 0 है, कहां पर close 0 open 1, और मॉड्यूलस ऑफ fn x is equal to 1 के लिए ये 1 है, fn1 minus 1. समझ में आ रहा है आपको? Okay, this will be what? Yes, sir. Supremum of fnx is x plus 2 n. x कहां से लेना है? close 0 open 1 में से, और fn1 की वैल्यू it is 1. So this is 1 minus 1 is 0 and we want supremum, so यहाँ पर 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. So you can see here this is 1 for all n. इसका supremum क्या आएगा? भले हमें 1 नहीं लेना है, लेकिन supremum will be 1 as x tends to 1, this will be 1, right? 1 raised to n. So and this is not going to 0 as n tends to infinity. This is constant sequence. और mn test में हमने लिखा कि mn अगर 0 पर नहीं जा रहा है, तो we can say that this convergence cannot be uniform convergence. Okay. Now problem कहां पर हो रही है? देखो यहाँ पर 1 के ऊपर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, right? So what I do is I will remove 1 from here. Let me take this domain, close 0 open 1, right? I'm taking this example number 2. fnx is equal to same sequence, but now x belongs to close 0 open 1. ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटिंग फंक्शन आ रहा था वो 1 के ऊपर डिसकंटीन्यूअस हो रहा था, राइट? तो अब अगर हम 1 डोमेन में से निकाल दे तो क्या होगा? we have to check only this. अब x 0 और 1 में से कोई भी हो, this will be what? This limit will be 0, क्योंकि हमें x लेना है close 0 open 1 में से. If you take any number from here, it will be strictly less than 1, and a number strictly less than 1 है, तो this raised to n is going to be 0. So this is a constant function for all x in 0 1. Now limiting function is continuous, right? Hello? Yes, sir. Yes, sir.
लिमिटिंग फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो अब वो जो रिजल्ट था कि यूनिफॉर्म लिमिट, ये तो कंटिन्यूअस आ गया, तो उसका यूज करके हम ये नहीं बोल सकते कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, या तो मना भी नहीं कर सकते कि दिस कन्वर्जेंस कैन नॉट बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सो व्हाट टू, तो अब हम क्या करेंगे, सो हमारा जो टूल है इसका हम यूज करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी आर Element test. Element test. यस, एनी क्वेश्चन। सुप्रीमम ऑफ दिस x कहां से लेना है हमें, क्लोज 0 ओपन 1 में से लेना है, राइट। Let us substitute these values. This is what supremum of x belongs to close 0 open 1. What is fn x? Fn x is x plus 1. Fx is 0, identically 0, so I am not writing here, right? And what will be this? 0. Say 0. fixed number. When you are talking, when n is fixed, x raised to n का supremum 1. supremum. Okay, let's take this function fx is equal to x raised to n. n के बदले 2 ले लो, चलो x square. This is an increasing function, right? Yes, sir. Yes, increasing function है तो लेफ्ट हैंड इंटरवल में लेफ्ट हैंड ऊपर वो स्मॉलेस्ट होगा, जैसे आगे जाओगे वैसे इंक्रीज होता जाएगा ना, तो सुप्रीमम कहां पर अटेंड करेगा, तो ऊपर के 1 पर, 1. 1 के ऊपर। यस, fx is equal to x cube, is it increasing? In general, fx is equal to x plus 2n is an increasing function, right? What is the problem? Any problem? x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी x raised to n बढ़ेगा, this is an increasing function, so it will attain its supremum on right hand point पर। भले हमें यहाँ पर 1 लेना नहीं है, लेकिन supremum will occur at 1 and it will be 1 raised to n, right? Is this clear? दिख रहा है आपको? Yes, Sir, Yes, sir, sir. sir, question છે સર 0 ને 1 ની વચ્ચે લેશું આપણે કોઈ પણ x, તો એ 0 તરફ જશે ને, 1/2 1/3 1/4 એવી રીતે, એટલે લિમિટ તો 0 જ હશે ને? Let me tell you, I want to what is m1, what will be m1, it will be supremum of x raised to 1, x belongs to close 0 open 1. What will be this supremum? એ તો 1 થશે. Supremum of x square, x belongs to close 0 open 1. ઓકે સર, ઓકે 1 થશે. So is it clear now? યસ સર. Yes. जब आप ये ले रहे हो तब आप n को वेरी नहीं करना है, n is fixed, right? So mn is 1 raised to n for all n, in particular mn is equal to 1 for all n, right? Now if you take n tends to infinity, अब आपको n को वेरी करना है, right? And this is not going to be 0 as n tends to infinity, therefore fn does not converge uniformly on close 0 open 1. Is that clear? Yes, sir. યસ સર. तो यहाँ पर क्या हुआ, सी ऑब्जर्व करना है, ये दिस विल बी हेल्प कि 1 के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, तो हमने 1 को निकाल दिया, राइट? 1 को निकाल दिया, फिर भी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं हुआ, राइट? ऐसा है, हमारा डोमेन ऐसा था, यहाँ से 0 से लेके 1 तक था, आगे हमने क्लोज 0 1 लिया, तो हमें पता चल गया कि 1 के ऊपर तो पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन आ रही हो, 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो सकता। 1 को निकालो, अब क्या होगा, फिर भी नहीं हो रहा, 1 को निकाला फिर भी, ओके, मैं क्या रहा हूँ, 1 का छोटा सा नेबरहुड निकाल दे रहा हूँ। आई एम टेकिंग सेम एग्जांपल नंबर 3, व्हाट आई एम टेकिंग हियर इज 0.9 में ले रहा हूँ, या फिर 0.99 0.999, you can take any number, right? So 1 से मैं थोड़ा दूर आ गया,
राइट। यहाँ पर ओपन ले लो, क्लोज ले लो, कोई भी ले लो। अब क्या होगा देखो, fn fx will be limit n tends to infinity fnx, this will be limit n tends to infinity x raised to n, x belongs to कहां से लेना है? अब थोड़ी देर यहाँ पर फोकस करना, लिखना मत, समझने की ट्राई करो, लिख सकते हो आप बाद में, अगर समझ लिया तो लिख सकोगे। ओके, तो x हमें जो पॉइंट वाइज लिमिट ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू 0.9 में से ले रहे हैं, राइट। So if you take any number here, this number will be strictly less than 1, and कोई भी number strictly less than 1 है, उसकी n पावर करो तो it will go to 0, right? Because this is a geometric progression with common ratio less than 1. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. fx is identically 0. Now mn टेस्ट में क्या होगा, हमें जो सुप्रीमम लेना है, हमें कहां से लेना है? सुप्रीमम लेना है क्लोज इंटरवल 0 टू 0.9 में से लेना है, राइट। दिस विल बी व्हाट? सुप्रीमम ऑफ x raised to n, fnx is x raised to n, fx is 0, ये तो 0 हो गया, fx is 0, right? Okay, again this is an increasing function, n is fixed. Again when we are talking about mn, n is fixed, so what will be mn here? क्या आएगा mn? Can anyone say? 0. No. 0.9 raised to n. This is an increasing function, क्लोज इंटरवल ab के ऊपर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम कहां अटेंड करेगा? राइट एंड 0.9. 0.9. राइट। सुप्रीमम ले रहे हो x के ऊपर, x 0 रखोगे you will get 0, 0.1 रखोगे 0.1 raised to n, 0.2 रखोगे 0.2 raised to n, 0.3 रखोगे 0.3 raised to n and so on. कहां तक जाना है? सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है तो राइट हैंड पॉइंट ऊपर सुप्रीमम अटेंड करेगा। यस, now if you take n tends to infinity, this will goes to where? mn is equal to a है ना। अब इसमें n tends to infinity करो, इसकी लिमिट क्या आएगी? 0. As n tends to infinity here, and therefore it means what? It means fn converges to f uniformly on closed interval 0, 0.9, right? Yes, sir. ओके, सपोज यहाँ पर मैं 0.99 कर रहा हूँ तो क्या होगा? यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा? होगा. See, यहाँ पर क्या आएगा? Right, 0.99, so it will go to 0. If you take 0.99999, क्या होगा? Uniform. Uniformly converge. Convergence. In general, like this, 0, a close ले लो, open ले लो, कोई भी ले लो, where a is strictly less than 1 होना चाहिए। a अगर strictly less than 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हर जगह 0, a 0, a, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुप्रीमम कहां से लेना है? 0, a के ऊपर से, राइट। सो यहाँ पर mn क्या आएगा? a raised to n आएगा। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज गोइंग टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिव करना पड़ेगा 1, राइट। 1 की नजदीक 99 कितना भी है आपको? हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सेम सिचुएशन विल बी इन दिस इंटरवल। अब याद करना, ट्राई करना एक्सरसाइज में। क्या करना? -1 से 0 में वी नो दैट जैसे आप -1 रखोगे यहाँ पर, -1 के ऊपर तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज ही नहीं हो रही, राइट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर भले हमें -1 नहीं रखना है, लेकिन -1 के पास उसको प्रॉब्लम है, तो इस इंटरवल के ऊपर दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट।
समझ में आया आपको? क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1 के ऊपर ये पॉइंट वाइज ही कन्वर्ज नहीं हो रही, तो हम -1 से नजदीक नहीं जा सकते। इन फैक्ट यू कैन टेक एनी इंटरवल ऑफ दिस टाइप -b, 0 और b, 0 वेयर b क्या लेना पड़ेगा आपको? -1 से थोड़ा दूर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। b is strictly greater than -1। क्या ट्राई करना x belongs to इसमें ट्राई करना, then इसमें ट्राई करना -0.920, एंड फिर इसमें ट्राई करना -b to b where b is strictly less than 1। ये तीन आपको ट्राई करना, तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रोसेस हो रही है, राइट? ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। क्या दिया गया है आपको प्रॉब्लम सेट में? व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके, लेट मी चेक। ओके, 1 to infinity अगर इसमें दिया गया हो तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट इवन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑन 1 to infinity, राइट? बिकॉज़ x is greater than 1, x raised to n will be divergent, so 1 to infinity में चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन। से 1/1 plus x raised to n ऐसा दिया गया है, fn(x) is equal to 1, क्या दिया गया है? 1/1 plus x raised to n। Let us start with x belongs to 0 and 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें? पॉइंट वाइज लिमिट इसकी फाइंड करनी है। सो इट विल बी fx is equal to limit n tends to infinity 1/1 plus x raised to n, और x हमें लेना है क्लोज 0 1 में से। So you can see here, if x is equal to 1, what will be fn1? 1/1 plus 1 raised to n ऐसा आएगा ना? If x is equal to 1, this 1 raised to n is 1, so this is a constant sequence 1/2. This is equal to 1/2 for all n, and means f11 is 1/2, f21 is 1/2, f31 is 1/2, so it converges to 1/2. So for x is equal to 1, this will be 1/2, और x की वैल्यू अगर 1 नहीं है, strictly less than 1 है, then x raised to n is going to be 0, right? This is 0, ये 0 हो गया, तो 1/1 is 1, और x belongs to close 0 open 1. So this is the pointwise limit. Is this clear? Yes, sir. sir. Now we want to check whether this convergence is uniform convergence or not. So we can see here this limiting function is discontinuous at 1, so this convergence cannot be uniform convergence because this every function is continuous. दिख रहा है आपको? यहाँ पर जो फंक्शन है इनफैक्ट इट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, बिकॉज़ क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटीन्यूअस है, तो इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। But this limiting function is not continuous at 1, so this convergence cannot be uniform convergence. Okay, कहां पर प्रॉब्लम है इसको कंटीन्यूअस होने में? 1 पे प्रॉब्लम है, तो हम 1 रिमूव कर देते हैं। लेट अस टेक क्लोज 0 ओपन 1। क्लोज 0 ओपन 1 में क्या होगा? यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 1, तो ये वाला केस निकल गया। तो x की वैल्यू 1 नहीं होने वाली है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 रहेगी। कोई भी पॉइंट इसमें से ले लो, आपको क्या ऐसे देखना है? लेट अस टेक a from this interval. If you take a belongs to here, then fna क्या है? 1/1 plus a raised to n ऐसा आएगा ना? इसमें अगर आपको पता ना चले तो ऐसा कर दो। Now a 0 है या तो 1 से strictly less than, if you take n tends to infinity, this will goes to 0 because this is strictly less than 1. A is strictly less than 1, so this limit is 1. Is that clear? Yes. Now limiting function is continuous. Constant function है, limiting function is constant, so it is continuous, right? Yes. Yes, sir. उसे तो हम डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि दिस कन्वर्जेंस कैन नॉट बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। कैसे पता है हमें? कोई बताएगा? सर mn equal to 1 आ जाएगा।
mn की बात छोड़ो, वो तो दूर की बात है, डायरेक्टली देख के बता सकते हो। आगे के एग्जांपल में हमने जो देखा, हमने क्या देखा था कि वहां पर फंक्शन जो लिमिटिंग फंक्शन आ रहा था उसको 1 के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने 1 जैसे निकाला तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हुआ। क्या निकालना पड़ेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चाहिए तो? 1 के One. नेबरहुड। पूरा नेबरहुड 1 से थोड़ा आगे आना पड़ेगा तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? ओके, बट सेक ऑफ कन्वीनियंस हमें देख लेते हैं कन्वर्जेंस होता है कि नहीं होता। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट mn. व्हाट इज mn? mn is equal to this is supremum of, दिख रहा है आपको, fnx minus fx, where x हमें कहां से लेना है? डोमेन में से, क्लोज 0 ओपन 1. This will be what? This will be supremum of x belongs to close 0 open 1. What is fnx? fx is 1. So let me write fnx is 1 upon 1 plus x raised to n minus 1. fx की वैल्यू 1 है, fnx ये, right? Okay, this will be what? So this is equal to supremum of x belongs to close 0 open 1. If I take this as an LCM, 1 will get cancelled and you will get x raised to n upon 1 plus x raised to n. Is this clear? Yes, sir. यस सर। सुप्रीमम फाइंड करना है, कैसे सुप्रीमम फाइंड करेंगे? स्टेशनरी पॉइंट। यस, एक रास्ता ये है कि इसको आप फंक्शन बोल दो और इसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करो। ओके, दूसरा रास्ता मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि x नॉन जीरो है। से x अगर 0 है तो दिस ये वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। इसके सुप्रीमम जो अगर होना है वो 0 पर नहीं आएगा, राइट? सो आई कैन राइट लाइक दिस, सुप्रीमम ऑफ, मैं ओपन 0 ले रहा हूं, ओपन 0 ले लो, क्लोज, क्योंकि मुझे x raised to n को डिनोमिनेटर में जाने देना है। आई वांट टू राइट लाइक दिस, लिख सकता हूं ऐसे? यस सर। यस, 0 मैंने क्यों निकाला? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, राइट? Yes, sir. एंड 0 के ऊपर सुप्रीमम भी नहीं आने वाला, ये भी हमें पता है। इसका सुप्रीमम 0 नहीं होगा, इसमें एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो सुप्रीमम विल बी नॉन जीरो, राइट? इसलिए मैंने 0 निकाला। अगर सुप्रीमम 0 के आसपास आने वाला होता तो 0 ऐसे नहीं निकाल सकते। ओके, सो दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, यू वांट टू फाइंड सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर जैसे मिनिमम होगा तब सुप्रीमम आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चाहिए तो x को क्या करना पड़ेगा? मुझे मैक्सिमम बनाना पड़ेगा और x की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। सो यहाँ पर 1 रखो तो 1 plus 1 is 2, so this supremum is 1/2. This is mn. mn is equal to 1/2 for all n. This is not going to be 0 as n tends to infinity. Is that clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now let me try over this interval, say 0, मैं ले रहा हूँ कोई भी नंबर a where a is strictly less than 1. मैं a से थोड़ा दूर आ गया, a can be 0.9, 0.99, 0.99, ज्यादा भी a can be 1/2. See, अगर बड़े सेट पे वो यूनिफॉर्म कन्वर्ट हो रहा है तो छोटे सेट पर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? So now let us try to find out this. Pointwise limit will be what? Limit n tends to infinity 1 upon 1 plus x raised to n, x belongs to this interval. This will be what? fx is equal to, now again a strictly less than 1 है तो कोई भी x लोगे यहाँ पर, because a is strictly less than 1 implies x पर strictly less than 1 ही होगा, क्योंकि x आप यहाँ से ले रहे हो, राइट? और x strictly less than 1 है तो x raised to n is going to be 0. So if this is 0, Yes, this sir. is function 1, right? So again mn क्या सिर्फ डिफरेंस आएगा, हमें जो सुप्रीमम लेना है वो लेना है 0, a के ऊपर, और ये क्या आएगा? 0, a के ऊपर सुप्रीमम लेना है fnx minus fx. What is fx? fx is 1.
So same situation here, x belongs to 0 to n. अगेन हमें पता है कि सुप्रीमम 0 के ऊपर नहीं आने वाला, एक ही नजदीक आएगा. So now you can see what will be the supremum. इसको मैक्सिमम बनाना, सॉरी सुप्रीमम के लिए इसको मिनिमम बनाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाने के लिए इसको क्या बनाना है, x raised to n की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी. So it will be 1 upon a raised to n plus 1. It will be like this. Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 1 upon a raised to n plus 1. Yes. If n tends to infinity, this is going to be 0. Because a is strictly less than 1. Again, we are using. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So now this is uniform convergence of this interval, right? Okay. Let us take next one. एक ऐसा दिया गया fn x is equal to x raised to n. यहाँ पर x raised to n है. ओके, इसको हम 1 के इंफिनिटी ऊपर भी देख लेते हैं. सेम प्रॉब्लम. आप देख के बता सकते हो 1 इंफिनिटी में यूनिफॉर्म कन्वर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता? हेलो. No, sir. Not continuous. Yes, limiting function will not be continuous. ध्यान रखोगे, you will get 1 by 2 here. और x जैसे 1 से बड़ा होगा, x raised is going to be infinity, so it will be 0. Limiting function कैसा आएगा, इसका ऐसा कुछ आएगा. अगर 1 to infinity में बात कर रहे हो, x is equal to 1 के लिए 1 by 2 and x greater than 1 हो गया, x strictly greater than 1, so x raised to n is going to be infinity. And if this is infinity, 1 upon infinity is going to be 0. So this limiting function is discontinuous. So on this interval, it cannot be uniform convergence. Okay. So open interval 1 infinity पे भी ये uniform converge नहीं हो सकता. So let me take this type of interval, say b comma infinity, where b is strictly greater than 1. इसके ऊपर क्या होगा? Let's see. So x we are taking from b to infinity, right? b to infinity है means x greater or equal to b है. b या b से बड़ा है. और x b से बड़ा है means 1 से बड़ा है. If x is greater than 1, then this is going to be infinity. So this function is 0. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Limit is 0. So now let us calculate mn. What is mn? So mn is equal to what? It will be supremum of fnx minus fx. और x हमें कहाँ से लेना? हमारा डोमेन में से. डोमेन है d to infinity, right? So this will be supremum. दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? देखा ही sir. Yes. So this will be supremum of what? What is fnx? It is 1 upon 1 plus x raised to n. What is fx? Fx is 0, so I am not writing here, right? इसका हमें supremum चाहिए. So now you can see x denominator में आ रहा है, तो जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे x बढ़ेगा, overall quantity will be decreased. So this is a decreasing function of x, right?
if this is a decreasing function of x, तो supremum कहाँ अटेन होगा? b के ऊपर 1 plus b raised to n. Is that clear? Yes, sir. Clear. Sir. And if you take n tends to infinity, since b is strictly greater than 1, this is going to be infinity because b is greater than 1. So this is going to be 0 as n tends to infinity. So this convergence is uniform convergence, right? Yes, sir. Yes, sir. This x belongs to over this interval 0, a union b, infinity, right? Where a is strictly less than 1 and b is strictly greater than 1, then this sequence converges uniformly. Can we say that? देखना ट्राई करना क्योंकि इसको ऊपर हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाया, इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाया, वॉल के ऊपर यूनियन के ऊपर क्या होगा ये आप ट्राई करना, राइट? ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल, and that is how much time do we have? Yes, एक ऐसा है n x raised to n into 1 minus x, fn x is equal to See, I am taking random examples from the problem set क्योंकि आप दो चार ऐसे प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बाकी में कैसे करना है, राइट? ये लेना है कि इसके अलावा भी ओके, लेट मी टेक दिस वन x is raised to minus nx square. This has been answered. fn x is equal to x. आपके प्रॉब्लम सेट में जो प्रॉब्लम दिया गया है नंबर 4, fn x is equal to x e raised to minus nx square. e raised to minus nx square ऐसा कुछ दिया गया है और x belongs to क्या दिया है? x is in R. Then the converges uniformly on R. X belongs to R. Let us discuss about this one. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first of all, let us find pointwise limit. So here, fx is equal to what? Limit n tends to infinity. What? fn x. This is what? Limit n tends to infinity. X into e raised to minus nx square. See, x belongs to R. Yes, we can write like this also. N tends to infinity. X upon e raised to nx square. See, x is a fixed number. For each x, when we are taking pointwise limit, for each x is a fixed number. X अगर 0 है, तो numerator will be 0. So answer is 0. X अगर non-zero number है, तो this is an exponential function of n. This is a polynomial function. यहाँ पर तो कुछ n वाली टर्म ही नहीं है ना. If you take n tends to infinity, this will go to infinity. So this is 0 for all x belongs to I. So limiting function is continuous function, right? So now let us consider or try to calculate what is mn. Mn is equal to what? Supremum of fn x minus fx. और x हमें कहाँ लेना है? R में से लेना है. So this will be supremum of x belongs to R. See, fx is 0. So I'm not going to write this. What is fn x? This is supremum of x into e raised to minus nx square. अब इसका सुप्रीमम कहां पर अटेंड होगा ये डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते. Neither this is increasing nor this is decreasing. ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते, राइट? So
सुप्रीमम मींस इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो व्हाट वी विल डू, हमारे पास जो रास्ता है यूजुअल उसका हम यूज करेंगे कि इस फंक्शन અત્યારે પાછળથી કેમ ઓછા કરાવી નાખ્યા છે, પાછળથી ઓછા કરાવ્યા. હા मैं इसको gx बोल देता हूँ. आई एम नॉट फोकसिंग अबाउट n. n इज फिक्स्ड नंबर, राइट? राइट नाउ जब हम mn कैलकुलेट कर रहे हैं, n इज अ फिक्स्ड नंबर, so I am focusing on gx. gx is equal to x into v raised to minus nx square. I am interested to find out the supremum value, means इसका maximum minimum हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसका डेरिवेटिव लेके, we know that. So let us calculate what is g dash x. g dash x will be, when you are differentiating with respect to x, this is what, product of two functions, right? So क्या होगा, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव रूल आप अप्लाई करोगे तो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी e raised to minus nx square into what, minus 2nx. इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा minus 2nx. So first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first is one. So let us take e raised to minus nx square common. What you will get is यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा minus 2nx square, right? 2nx into x is minus 2nx square. Let me take minus 2n common, so this will be minus nx square into minus 2n. Minus 2n आप कॉमन ले रहे हो तो you will get x square minus 1 by 2n. So this is nothing but e raised to minus nx square into minus 2n into x minus 1 upon 2n into x plus 1 upon 2n. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Draw the rough sketch of gx. I want to draw the graph of gx. I'm drawing rough sketch, not exact sketch. This is, तो g dash x कहां पर 0 होगा? See, this exponential function can never be 0. ये 0 नहीं होगा. यहाँ पर n आ रहा है, means either x is equal to 1 upon square root 2n के ऊपर 0 होगा या तो minus 1 upon square root 2n के ऊपर 0 होगा. So let me take here say minus 1 upon square root 2n. And हमें after all n tends to infinity करना ही है. When we are going to talk about mn, हम n tends to infinity करने वाले हैं, so this will be a very small number, nearly equal to 0, right? हम ले सकते हैं. This is 1 upon under root 2n. फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा? देखो, मैं x यहाँ पर ले रहा हूँ, x कैसा है, minus 1 upon square root 2n से छोटा है. अगर छोटा है तो ये क्या हो गया, x minus minus 1 upon 2, this will be negative, this is also negative, negative into negative is positive. So this product will be positive, but यहाँ पर minus sign है, so this will be negative. So g dash x will be less than 0 here. कहाँ पर? Here. यहाँ पर less than 0 है तो definitely यहाँ पर greater than 0 होगा, क्योंकि 1 will be negative, 1 will be positive. x इससे छोटा है ना, तो this will be positive, this will be negative. Negative into negative positive. और यहाँ पर g dash x again कैसा हो जाएगा, less than 0 हो जाएगा. Is this clear? Hello. Yes, sir. Repeat one time. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो रहा हो वहां पर वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, मींस g का जो ग्राफ आएगा, टॉकिंग अबाउट g, दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ, लेकिन इस तरफ वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक डिक्रीज होगा. यहाँ g dash x पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा. कहां तक इंक्रीज होगा, 1 upon square root 2n, और फिर से डिक्रीज हो रहा है तो इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम हियर, समथिंग लाइक दिस. दिस इज नॉट एग्जैक्ट, मे बी यहाँ पर कुछ रखो तो दिस विल बी वेरी स्मॉल वैल्यू, बट ऐसा कुछ आएगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. इट मींस gx मैक्सिमम वैल्यू कहां पर अटेन करेगा, x इज इक्वल टू 1 upon square root 2n के ऊपर. मिनिमम कहां अटेन करेगा, minus 1 upon square root 2n के ऊपर. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इट मींस कि यहाँ पर हमें जो सुप्रीमम चाहिए, x belongs to r हमें लेना है, राइट? बट सुप्रीमम कहाँ मिलेगा, x is equal to 1 upon square root 2n के ऊपर. तो this supremum will
will occur at x is equal to 1 upon square root 2n. x की जगह आप 1 upon square root 2n रख दो, क्या आएगा? 1 upon square root 2n into e raised to minus n into x square is 1 by 2n. n will get cancelled and तो क्या आ गया mn? Therefore mn is equal to e raised to minus 1 by 2 upon under root 2n. Is this clear? Yes. Now, see, this is a fixed number. If you take n tends to infinity, this is going to be n tends to infinity, right? Hello? Yes, sir. Yes. And if this is going to be 0, means what? And that Uniformly convergent. fn converges to f uniformly on all of R. See, simple है, एक ही टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ mn टेस्ट, राइट? Almost all examples हमें मिल जाएगा. Okay. कितना टाइम है फ्रेंड? See, now आप ऑप्शंस देख सकते हैं और you can क्या ऑप्शन दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन R. So first option is true. This sequence is uniformly convergence on R. Second option is uniformly convergence only on compact subset of R. So this is not true. See, only word यूज किया है, आपके पास है ना वो क्वेश्चंस, उसमें सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि this sequence converges uniformly only on compact subset of R. So this is not true क्योंकि only word यूज किया है, ये this is not a compact subset, फिर भी ये uniform converge हो रहा है. only word यूज नहीं किया होता तो that option is also true. ऑप्शन सी दिया गया है bounded but not uniformly convergence, not uniformly convergence बोल रहा है, not true. And number 4 बोल रहा है कि this is a sequence of bounded functions. Okay, is this a sequence of bounded functions? क्या लग रहा है आपको? Is it a sequence of bounded functions? Means each fn is bounded. fn आप ये ले रहे हो तो is it bounded or unbounded? Unbounded. No, it is bounded. 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 Raised to x greater than or equal to x. Therefore, x upon e raised to x is less than or equal to 1. Yes, good. Okay. Next, let us take 1 upon 1. Sir? Hello. Yes, any questions? સર હા સર તમે જે ગ્રાફ ડ્રો કર્યો હતો ને Yes. સર એમાં તમે 1 upon મતલબ √2 જે વાળું હતું એમાં તમે એ તો જેનો રૂટ હતો ને સર જે g'(x) નો હતો એ ત્યાં તો વેલ્યુ 0 હોવી જોઈતી હતી ને રફલી ગ્રાફ હતો તો બી No, no. See, ये g'(x) की वैल्यू क्या 0 था? x is equal to 1 upon √2 है, ऊपर g'(x) की वैल्यू 0 था, बट आपने ग्राफ ड्रॉ કર્યો તો gx નો, g'(x) નો નહીં. ઓકે સર ઓકે તો સમજજો બરાબર, કન્ફ્યુઝન થશે કારણ કે તમને એવું લાગશે કે g'(x) બરાબર 0 લીધું તો ત્યાં 0 થવી જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ ક્વેશ્ચન, એનો મતલબ કે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન છે અહીંયા, તમે વિચારો. સર ત્યાં એવું કન્ફ્યુઝ થયું કેમ કે તમે g કે g' નું લખ્યું નતું એટલે ગ્રાફ ડ્રો g' ના કરતા હતા એટલે મને લાગ્યું કે જો g' નો ગ્રાફ હોય તો ત્યાં પોઈન્ટ આગળ વેલ્યુ 0 આવી જોઈતી હતી કે gx નો છે તો બરોબર છે પણ g'(x) નો હોત તો ત્યાં પોઈન્ટ આગળ વેલ્યુ 0 આવી જોઈતી હતી. See, g'(x) become why we have derived this g'(x) क्यों कैलकुलेट किया ताकि हमें पता चले कि gx का बिहेवियर कैसा है, राइट? यस सर, इंक्रीज છે કે ડિક્રીઝ છે તેના પરથી મતલબ ખબર પડશે g એની વેલ્યુ. ઓકે સર. Yes, let us see one more problem. See, this has been asked twice, June 2016 and June 2017. Same question दो बार पूछा गया है. fn(x) is equal to 1 upon 1 plus n square x square ऐसा दिया गया है और क्या दिया गया है? x belongs to R. Uniform convergence on clause 0, 1. Okay, clause 0, 1 and clause 1 by 2, 1. X belongs to clause 0, 1. And एक दिया गया है clause 1 by 2. इन दोनों के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा?
I think, see this. Hello. So first of all, let us calculate limit, pointwise limit. This will be what 1 upon. See, pointwise limit जब ले रहे हो तब x is fixed, आपको n को vary करना है. Okay. And when you are taking n tends to infinity, this is if this is any number, if x is 0, see ऐसा कुछ केस आ सकता है वो आपको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि अगर x 0 हो गया तो n वाली टर्म भी निकल जाएगी. This will be constant sequence 1, right? So x is equal to 0 के लिए क्या आ रहा है? It is 1. And x अगर non zero है तो this will go to infinity, so this is 0. So you can directly say that this cannot converge uniformly on closed interval 0, 1. Is it clear? Because limiting function is discontinuous. Now, so ये ऑप्शन निकल गया. ये पूछा गया है. Twice. Okay. So let us take on 1 by 2 to 1. X belongs to closed interval 1 by 2 to 1. तो यहाँ पर क्या होगा? अब x तो non zero है. If you take n tends to infinity, this will be 0 for all x. This is a constant function. Fx is a constant function, right? So let us calculate mn. Now, what is mn? It is supremum of fnx minus fx. X belongs to कहाँ पर लेना है? Closed interval 1 by 2 to 1. So this will be supremum of closed interval 1 by 2 to 1. fnx. 1 upon 1 plus n square by 4. So this is very much simple because x denominator में ही आ रहा है. So this is a decreasing function of x, right? x जब numerator denominator दोनों में आ रहा हो तब problem होगा. तब you cannot say that whether it is increasing or decreasing. पर यहाँ पर तो x decreasing ही है. Sorry, x denominator में आ रहा है. So this is a decreasing function. And if this is decreasing function, what you will do? 1 by 2 के ऊपर supremum attend करें. x equal to 1 by 2. Right? And denominator में आ रहा है तो this is going to be 0 and that's to infinity. Simple है, right? Hello. Yes. Yes. Yes, Prem, how much time do you have? Do you have question answer के लिए रखना है time के? Shall I continue? Continue. We can continue, not an issue. Time is not a limit. So let us take one more problem. And it is this one. Actually, this is one of my favorite problems. I'm defining like this. fnx is equal to, I'm taking x upon x square. When x belongs to what? Say 1 upon n to 1. Let me take n plus 1. And 0 otherwise. Just a minute. Yes. X upon n square
when x belongs to 0 to n. And this is what otherwise means n to infinity. So take this to have fn convert this to have uniformly on close 0 open infinity. Uniform converts हो रहा है. Yes. Here, what is fx? Fx is limit n tends to infinity fnx, right? What is fnx? इसका ग्राफ देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. सी जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो फंक्शन ऐसा ही हो जाएगा x अपन n स्क्वायर टाइप वाला, राइट? क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है 0 से n में से f1x क्या आएगा? f1x ऐसा आएगा x upon 1 square x1 when x belongs to 0 to 1 and 0 when x is in 1 to infinity. f2x क्या आएगा? f2x will be x upon 2 square from 0 to 2 and 0 when 2 to infinity and so on. What is f3x? It will be x upon 3 square when x belongs to 0 to 3 and 0 when x belongs to 3 to infinity, right? If you draw the graph, first function 0 से 1 में डिफाइन किया गया है. 0 से 1 में क्या डिफाइन किया गया? y is equal to x का ग्राफ ऐसा. और 1 to infinity में it is 0. This is f1x. f2x में क्या हो रहा है? f2x है जो 0 से 2 के ऊपर डिफाइन किया गया है. 0 से 2 में क्या है? x upon 2 square ऐसा कुछ. स्लोप इसका 1/4 होगी और आगे से ये 0. x3 में क्या है? x3 ऐसा कुछ है x upon 3 square यहाँ तक. ये आगे से 0 है then x upon 4 square. So you can say this. ये जो फंक्शन f1 f2 f3 डिक्रीज होता जा रहा है, राइट? If you take n tends to infinity it will be identically same. If you take n tends to infinity x upon x square x is fixed number. This is going to be 0, this is 0, so answer is 0. Is this clear? Pointwise limit? Yes. Yes. So now let us check whether this converges uniformly or not. So Uniformly. what is Mn? It is supremum over x belongs to 0 to infinity. Fnx minus fx. Fx is 0. Fnx is x upon x square. Right. इसका सुप्रीमम क्या आएगा? ओके. तो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ. अब देखो फंक्शन जो है लेट मी राइट लाइक दिस. ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते. वी कैन राइट fnx. बट fnx जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया. कैसे डिफाइन किया गया? 0 से n में अगर है 0 से n में हमें लेना है x अपन n स्क्वायर. x कहाँ लेना है? 0 से n और उसके आगे n से इंफिनिटी में 0 है, राइट? जो सुप्रीमम आएगा वो स्टार्टिंग में ही अगर होगा ना. यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन जो था वो 0 से 1 पे था, बाकी 0 था. तो मींस f1 का सुप्रीमम कहाँ पर आएगा? 1 पर आएगा. f2 जो था वो ऐसा कुछ था. f2 का सुप्रीमम 2 पर आकर होगा. f3 का सुप्रीमम 3 के ऊपर आएगा, राइट? So fn का सुप्रीमम n के ऊपर आएगा. So this will be what? This will be n upon n square. This will be 1 upon n. Is that clear? Yes, sir. Sir, clear. Hello. Again, सुप्रीमम लेना है हमें 0 से इंफिनिटी में. When n is fixed, n अगर फिक्स्ड है तो n से आगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. n से आगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. तो सुप्रीमम हमें कहाँ लेना है? 0 से n में ही लेना है. और 0 से n में दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इट विल अकर एट n upon n square. x is equal to n. n upon n square is 1 upon n and this is going to be 0 as n tends to infinity. And
Therefore, Fn going to have uniformly, right? 1 plus 0 infinity. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Why I'm taking this example? Because this is interesting. Now, see here. What I am doing is, I want to calculate this limit. Limit n tends to infinity, integration 0 to infinity fn x dx. 0 से infinity के ऊपर मैं fn का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ. तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब जो fn कैसे डिफाइन किया गया है? fn है 0 से n में x अपॉन n स्क्वायर है और n से आगे इसकी वैल्यू 0 है, तो मुझे fn का इंटीग्रेशन करना है तो सिर्फ x अपॉन n स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है. कहां से? 0 से n में. n से आगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Will be what? This will be limit n tends to infinity. When you are taking integration with respect to x, 1 upon n square is constant, so it will come out. Integration of x is x square by 2 from 0 to n. If you substitute n, you will get n tends to infinity 1 upon n square. As it is, this is n square by 2 minus 0. N square will get cancelled. This is 1 by 2. Let me go this as number 1. Right? Hello. Now, let me do this integration 0 to infinity limit n tends to infinity fn x. Means this is nothing but integration 0 to infinity fx dx. ये क्या है? What is fx? See, this is improper integral. So directly हम evaluate नहीं कर सकते. अगर इसको evaluate करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे limit t tends to infinity integration 0 to t fx dx. Is that clear? Yes, sir. Okay. This is improper integral. Unbounded limit है. So directly we cannot evaluate. We will write like this. T tends to infinity integration 0 to t fx dx. But what is fx? Fx is identically 0. So integration will be 0. So this is limit t tends to infinity 0. And this is again 0. This is number 2. 1 और 2 में से आपको कुछ दिख रहा है? What is the conclusion? 1 not equal to 2. Sorry, 1 is not. मैंने स्टार्टिंग में किया कहा था, हमने जो स्टार्टिंग में रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे, क्या किया था कि अगर fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली है और each fn कंटीन्यूअस है तो f will be continuous. If each fn uniformly continuous, then f will be uniformly continuous. If each fn is bounded, then f will be bounded. अगर each fn is integrable, here each fn is integrable. F is not integrable. Sorry, f is integrable, but limits are not same. So let me write properly. If fn converges to f uniformly on say closed interval 0 to infinity or minus infinity to infinity, you can take unbounded interval also. Then इंटीग्रेशन 0 to infinity fn x dx की जो लिमिट है, this limit I am not writing not equal to, I am writing may not be. In general ये इक्वल होना जरूरी नहीं है. May not be equal to integration limit and integration you cannot interchange on unbounded interval. See, on bounded interval it is true. Let me write this result. If fn converges to f uniformly on closed interval ab, this is precisely आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछते हैं. आपके प्रॉब्लम सेट में जो प्रॉब्लम्स है उसमें मैंने लिखा है कि कब कब पूछा गया. 2 या 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया. where ab is bounded interval, that is important. अगर बाउंडेड इंटरवल है तो क्या होगा? देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a to b fx dx
will be same as integration a to b fx dx. जैसे डिफरेंशिएशन में होता हो, डिफरेंशिएशन में क्या कंडीशन है, अगर fn डैश कन्वर्जेंट है, fn डैश कन्वर्जेंट है तो fn डैश की लिमिट एंड f डैश की लिमिट सेम आएगी अगर कन्वर्जेंट है तो। सिमिलरली इंटीग्रेशन में क्या होगा, आप बाउंडेड इंटरवल पे इंटीग्रेशन ले रहे हो तो ये दोनों सेम आएगा यहाँ पर fn, राइट। लेकिन अनबाउंडेड इंटरवल पे ले रहे हो तो दिस may not be equal. This is important. प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन, Eight. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सभी सेम जैसे ही है। 10 थोड़ा सा डिफरेंस है। और ओके, वन मोर थिंग, 8 और 9 में जो सीक्वेंस दी गई है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यू कंटीन्यूअस फंक्शंस दी गई है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, राइट। तो ये दिस इज नॉट काउंटर एग्जांपल फॉर क्वेश्चन नंबर 8 और 9। So why this is not counter example, because fn is not continuous. You can see here n के ऊपर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, n के ऊपर जा रहे हो, यहाँ 0 है, यहाँ n है, तो यहाँ फंक्शन है x अपन n स्क्वायर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू n की ओर ले जाओ, you will get 1 by n, राइट। और यहाँ कांस्टेंट फंक्शन 0 है तो राइट हैंड लिमिट विल बी 0। समझ में आ रहा है? So this is not continuous function. क्वेश्चन में हमें दिया गया है सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। में कंटीन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा। So let me define like this. I am defining another sequence जो आपको काउंटर एग्जांपल की तरह काम करेगी। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। मैं यही ले रहा हूं 1 पर n स्क्वायर। एग्जाम में आपको कैसे सोचना है, या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देख रहे हो तो क्या करना है, आप एक सीक्वेंस जानते हो, कौन से, ये वाली fnx ये जान रहे हो, x अपन n स्क्वायर 0 से n में 0 n to infinity, राइट, ओपन n। आप जो सीक्वेंस जान रहे हो, जिसकी आपको पता है वो कंटीन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आपको काउंटर एग्जांपल के लिए चाहिए सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। इसमें एक एडिशनल कंडीशन दी गई है कि fn is a sequence of continuous function converging to f uniformly, then ऐसा कुछ दिया गया है, integration 0 to infinity fnx dx limit is equal to this। हमने देखा कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो रही है, बट ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा, लेकिन दिस इज नॉट अ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करो, fn को कंटीन्यूअस ले लो, तो हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, राइट। तो हमें क्या करना है, सो लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। इसमें से एक कंटीन्यूअस कन्वर्ट करना है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर n के ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो 1 by n लिमिट आ रहा है, यहाँ पर x is equal to n रखो, you will get 1 by n के ऊपर राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो 0 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, अगर ये फंक्शन को कंटीन्यूअस बनाना है तो सिंपली आई एम पुटिंग -1 by n हियर। यू हैव टू वेज, आइदर यहाँ पर 0 बना दो जब x is equal to n रखो तब, या तो फिर यहाँ पर 1 by n बना दो, या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो, क्या इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, 1 by n कर दो, n tends to infinity, right, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 by n आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 1 by n आएगी। नाउ दिस इज कंटीन्यूअस। लेकिन ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या होगा, वो जो इंटीग्रेशन जो हमें चाहिए, लिमिट n tends to infinity 0 to infinity fnx, ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए, शायद इसमें ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि n से आगे 0 ही रहने देते हैं, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया।
n से आगे 0 कर दिया तो 0 से n में ही इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? आइडिया समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस सर। x by n स्क्वायर का भी एक इंपॉर्टेंस है। मैंने x by n क्यों नहीं लिया? x by n भी ले सकता था, लेकिन x by n स्क्वायर इसलिए लिया कि यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x का क्या होगा, x स्क्वायर by 2 होगा। मुझे n स्क्वायर कैंसिल करना है क्योंकि आई वांट दिस टू बी फाइनाइट। अगर न्यूमरेटर में n बचेगा तो इट विल गो टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में n बचेगा तो इट विल गो टू 0। और लिमिटिंग फंक्शन की तो 0 आ रही है, मुझे 0 भी नहीं चाहिए, इंफिनिटी भी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वन। Okay, now check whether this sequence converges uniformly. Now this is a sequence of continuous function. Let me write. Then Fn is a sequence of continuous functions. What converges to F uniformly on unbounded interval. Again, bounded interval है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, इंटीग्रेशन और लिमिट सेम ही होगा। बाउंडेड इंटरवल है तो और इसकी प्रूफ आप किसी भी रेफरेंस बुक में एनालिसिस में देखना, आपको मिल जाएगा। क्या बाउंडेड इंटरवल के लिए दिस विल बी इक्वल। यहाँ पर अगर ए बी दिया गया है तो ये इक्वलिटी आएगी, बट दिस वन क्या आप चेक करना, आपको क्या चेक करना है? फाइंड इट्स पॉइंटवाइज लिमिट फंक्शन एफ(x) फाइंड करो। ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि डिसकंटिन्यूटी n के ऊपर हो सकती है, लेकिन n के ऊपर राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो दिस इज सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। कन्वर्जिंग यूनिफॉर्म है कि नहीं ये आपको देखना है। इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। फिर ये इवैल्यूएट करो, ये इवैल्यूएट करो, ये तो 0 ही आएगा। ये इवैल्यूएट करो, दिस विल बी नॉन 0। सो सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस है तो भी ये इक्वालिटी होना नेसेसरी नहीं। नाउ दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज। ये आपको एक्सरसाइज में करना है। एक्सटेंड दिस फंक्शन ऑन r। r के ऊपर आप इसको कंटिन्यूअसली एक्सटेंड करना है, जिससे ये हो रहा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fn(x) इज नॉट इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx। यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो रहा हो लेकिन ये दोनों इक्वल ना हो रहा हो। दिस इज एज एन एक्सरसाइज। ये आपको एक्सरसाइज में करना है। क्या करना है पता चला आपको? ये डिफाइन किया गया है 0 से इंफिनिटी में। कितने में डिफाइन है? आपको नेगेटिव रियल लाइन पर डिफाइन करना है। ऐसे डिफाइन करना है सो दैट इट इज कंटीन्यूअस ऑन r। वी वांट अ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन r, राइट? क्या आप ट्राई करना? यस, it is 11:59. Shall we continue or Yes. थक गए आप लोग? इतना रखना है कि आगे कंटिन्यू करना है? I think everyone is tired. Nobody is answering. Continue, sir. Continue, sir. कंटिन्यू करना है? Yes. ओके, तो देखो, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम आइडियाज कि हमें एग्जाम में क्या होता है। एग्जाम जब आप लिखने बैठो, ऑप्शन है, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन। बी सेक्शन में नॉर्मली क्या होगा? एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, 3 ऑप्शन गलत हो गए, राइट? तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक ऑप्शन सही प्रूव करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको कुछ रिजल्ट या स्टेटमेंट दिया गया है तो वहां पर आप उसकी प्रूव नहीं कर सकते। प्रूव करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। लिटिल बिट नहीं, काफी डिफिकल्ट है। अगर हमने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, लेकिन प्रूव करना क्योंकि कोई एग्जांपल लेके हम प्रूव नहीं कर सकते। कोई एग्जांपल देखा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ओके दैट इज फाइन। दूसरे में देखा हो रहा है, इट डजंट मीन कि जनरली ऐसा होगा, राइट? तो क्या करना है कि जो गलत ऑप्शन है वो निकालने की ट्राई करो। 3 गलत ऑप्शन निकाल दो,
दैट इज इजी। आपको किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट जस्ट वन एग्जांपल कि ये जो दी गई है ये प्रॉपर्टीज है और वो जो हो रहा है देन वाला वो नहीं हो रहा, मींस दिस ऑप्शन इज नॉट। ओके, आपको जो प्रॉब्लम सेट दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा बोल रहा है कि लेट fn be a sequence of continuous real valued functions defined on 0 infinity, right? Suppose that fn converges to f for all x and that f is integrable। काफी सारा दे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? fn is a sequence of continuous functions। This is a sequence of continuous function defined on 0 to infinity। 0 to infinity पर डिफाइन की गई है। This is continuous and fn converges to f for all x। This is pointwise convergence। fn converges to f for all x। This is pointwise convergence and f is integrable। This is also clear। f भी integrable दिया गया है। Then see, I am interested in last option। Option D में क्या दिया गया है? Option D says that if limit n tends to infinity, if limit n tends to infinity, integration 0 to infinity, sorry 0 to 1 दिया गया है, integration 0 to 1 modulus of fn x minus fx dx, if this is equal to 0, अगर ये 0 है, then fn converges to f uniformly on 0 infinity। 0 infinity है या 0 1 है? 0 1। Okay, see this is an interesting question। Why this is interesting? Because हम जो भी रिजल्ट्स जानते हैं वो हम क्या जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो ये होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो होगा। We know that अगर fn converges to f uniformly है 0 1 के ऊपर तो क्या होगा? ऐसा होगा। This is true। Limit n tends to infinity, integration bounded interval के ऊपर fn x dx is equal to 0 to 1 fx dx। fn 0 1 implies this, this implies this we know। तो इसको इस तरफ ले लो तो this is, अगर ये है तो ये होगा। हमें रिवर्स पूछा गया है कि ये है तो ये होगा कि क्या लगता है आपको? या तो फिर सपोज के हमने ऐसा कुछ रिजल्ट देखा नहीं। सी दिस इज कॉमन सेंस, ऐसा कुछ आया नहीं है कहीं। और व्हाट आर द चांसेस कि ये 0 हो रहा हो पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज ना हो रहा हो? इसके लिए क्या चांसेस और कैसे, कितने चांसेस है? ज्यादा चांसेस है होने के, नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? सो लेट अस थिंक अबाउट दिस वन। See, fn और f almost equal to same। Pointwise converge हो रहा means fn x going to fx, ये दोनों almost equal to same होने जा रहे हैं, right? और same होने जा रहा है तो difference will go to 0। Difference will go to 0 means ये लिमिट 0 pointwise convergence हो तो भी होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये दोनों almost equal होने वाला है। या तो फिर हम ऐसा करें कि एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कंस्ट्रक्ट कर दे, कैसी कि यदि fn x जैसे ये हो रहा हो fn x minus fx tends to 0 हो रहा हो इसके ऊपर, और ये ना हो रहा हो means I want a sequence which is not uniformly continuous। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए uniformly continuous नहीं होना चाहिए, but ये इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए, right? If I want this integration to be 0, मैं ऐसी कुछ सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर लूं जिसका fx 0 आ रहा हो, जिससे मुझे ये कंसीडर करना ही ना पड़े, राइट? मैं ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। सी ये कैसे सोचना है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ, ये होगा नहीं होगा, वी डोंट नो एनीथिंग, हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि मुझे ऐसी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कि ऐसा काउंटर एग्जांपल मिलेगा इसका, इसको यहाँ से कि ये दोनों सेम हो रहा है तो fn x minus fx 0 होने के चांसेस ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होगी और ये 0 हो सकता है। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो भी दे आर गोइंग टू बी इक्वल, राइट? और ये इक्वल हो गए तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अ सीक्वेंस व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बट दिस हैपन। ये चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, fx मेरा 0 हो रहा हो ऐसा कुछ ले लूं
तो I want to construct the sequence fnx जिसका इंटीग्रेशन fnx dx 0 आ रहा है, तो ऐसे कैसे कंस्ट्रक्ट करनी? एंड यू नो दैट fnx क्या है? fnx का इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन मींस एरिया। आपको 0 1 में ऐसी कोई सीक्वेंस बनानी है जिसका एरिया टेंड्स टू 0, ऐसी कोई सीक्वेंस ले लो। See, let me call this as an f1x, this is f2x, this is f3x. So you can see this, right? fnx कहां पर जा रहा है? fnx is coming to 0। या तो फिर ये जो एरिया है, इंटीग्रेशन मींस एरिया, ये भी 0 के ऊपर जा रहा है, राइट? ओके, so let us consider this sequence। कौन सी सीक्वेंस? ये आपके प्रॉब्लम सेट में ही दी गई है। कहां पर? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। सी, प्रॉब्लम ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका प्रॉब्लम नंबर 11 भी हो जाएगा। fnx ऐसा दिया गया 1 nx। यहां से आपको आइडिया आ रहा था ना? सी, दिस इज से 1 0 1, दिस इज 0 1। तो ये लाइन कौन सी होगी? x plus y is equal to 1 लाइन होगी, मींस y is equal to 1 minus x होगा। y is equal to 1 minus x मींस मैं इसको f1x बोल दूं तो 1 minus x मिल जाएगा। सेकंड में स्लोप डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो f2x क्या आएगा? 1 minus से 2x लेंगे, इसका स्लोप -2 होगी। 1 minus 3x, 1 minus 4x। इन जनरल 1 minus nx कहां पर? x belongs to 0 to 1 by n, or this is 0 and x belongs to 1 by n, to you can say infinity। see, हमें sequence of continuous function of 0 to infinity चाहिए, लेकिन 0 1 में से सी ये कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जो सीक्वेंस डिफाइन करनी है, it should be defined on 0 to infinity, it should be continuous on 0 infinity, but ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहां नहीं चाहिए? ओनली 0 1 में। आगे हो रहा हो ना हो रहा हो डजंट मैटर। So we are defining this sequence। You can see that f1x is 1 minus x, f2x is 1 minus 2x, something like this is that, f3x is 1 minus 3x, and so on। So what will be fx? So you can see here जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, इसमें 0 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही आ रही है, राइट? x is equal to 0 रखो तो 0 के ऊपर वैल्यू 1 आएगी। x 0 ऐसा कोई इंटरवल में नहीं आएगा। आई मीन सी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या हो रहा है? f1 0 क्या होगा? x is equal to 1 रखो, f1 0 is 0, sorry 1, f1x is equal to 1 minus x when x belongs to 0 to 1 and 0 1 to infinity। so what is f1 0? 0 इसमें आएगा तो यहाँ पर 0 रखोगे तो 1 आएगा। what is f2x? f2x is 1 minus 2x, यहाँ पर 0 से 1 by 2 and then 0, so f2 0 0 आपको यहीं पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 cannot be greater than 1 upon n for any n। 0 will always be here, and if you take x is equal to 0 you will get 1। so this is 1 if x is equal to 0 and 0 if x is not 0। x नॉन जीरो है तो जैसे आप n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो फंक्शन ये आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। so you can see your limiting function is discontinuous, so this convergence cannot be uniform convergence, right? limiting function is discontinuous, therefore fn is not converges uniformly on 0 1, क्योंकि 0 के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, ये हो गया। now we have to check this one, so it is easy to check। now let us take this limit n tends to infinity, integration 0 to 1 fnx minus fx, this will be what? 0 to 1, what is fnx? fnx 0 से 1 by n में डिफाइन किया गया है। 0 से 1 by n क्या है? 1 minus nx, और 1 by n to 1 में it is 0, so I am not writing it here। Limit n tends to infinity, what will be this limit?
इसका इंटीग्रेशन है x माइनस nx स्क्वायर by 2. Is that clear? From 0 to 1 by n. This is what x की जगह आप 1 by n रखोगे, you will get 1 by n minus, यहाँ पर 1 by n रखोगे तो 1 by n square into n, so 1 by 2n. 0 रखोगे तो 0, and this is going to be 0. So ये हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, I think we should stop now. See, अभी you can ask simple questions. If Fn is converges to F uniformly, Gn is converges to G uniformly, can be said that Fn plus Gn converges uniformly, Fn minus Gn converges uniformly, Fn into Gn. Multiplication. See, addition subtraction में इतना problem नहीं होगा, but if you take pointwise multiplication, Fn into Gn, it cannot converge uniformly even if Fn and Gn both are converged uniformly. You have to you should try to find out such type of examples, right? So ऐसा कुछ आप करके जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन और लास्ट ईयर के जो प्रॉब्लम्स पूछे गए थोड़ा देख लो, तो आई थिंक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें पूरा मार्क्स 5 क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी में जितने क्वेश्चंस पूछे गए सभी हमें 100% नहीं लाना है, वहां पर 100% आएगा भी नहीं, कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो आराम से कि जैसे आपकी जीआरएफ हो जाए या एलएस हो जाए। यस, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। Is there any questions? If any participant have doubts or if you want to ask some other question related to real analysis, then you can ask over here. Hello. Yes. હા સર, સ્ટેશનરી પોઈન્ટ વાળો ટોપ ક્યારે લેવાનું હોય, ક્યારે ફંક્શન જોઈને ખ્યાલ આવે કે આમાં સ્ટેશનરી પોઈન્ટ લેવું પડશે? કે જ્યારે તમે mn = supremum of the fnx તમે મેળવો છો, when you want to calculate this supremum, इसमें अगर suppose x वाली टर्म ऊपर भी आ रही है, some x square or something, maybe some function of say gx, let me write okay, gx plus something hx, यानी कि आप डायरेक्टली जब डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डायरेक्टली आपको पता नहीं चलता, फंक्शन का बिहेवियर ऐसा हो कि कभी इंक्रीज हो रहा हो, थोड़े में डिक्रीज हो रहा हो, जिस यहाँ पर जो इंटरवल है AB उसमें आपको सुप्रीमम डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेरिवेटिव वाला एक्सट्रीम वैल्यू वाला लेके जाना पड़ेगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। सी, दो ही केस है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग आपको दिख रहा है तो वो राइट हैंड पॉइंट ऊपर सुप्रीमम अटेन करेगा, अगर डिक्रीजिंग दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड पॉइंट पर सुप्रीमम अटेन करेगा, या तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमारे पास वो था कौन सा x⁴ x⁴ वाला, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे थे x के साथ, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आप कन्वर्ट ना कर सको, इसमें ऐसा नहीं कि आपको कन्वर्ट करके ही जाना है, इसमें भी आप एक्सट्रीमम पॉइंट वाला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेगा एक्सट्रीमम पॉइंट वाला, राइट? तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली देख सकते हो, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि सुप्रीमम यहाँ अटैक करेगा, इंफिनिमम यहाँ अटैक करेगा। लेकिन अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये डेरिवेटिव टेस्ट लेके जाना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव टेस्ट में भी फर्स्ट डेरिवेटिव से कई बार जैसे हमने ये स्प्लिट किया था g'(x) वाला, ऐसा स्प्लिटिंग आपको नहीं मिल सकता, फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए भी जाना पड़ेगा। सुप्रीमम मिनिमम के लिए यू हैव टू गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव, यू नो दैट अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वो मिनिमम नेगेटिव आया तो सुप्रीमम अटेंड करेगा। या तो you have to go for that. Yes, और वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने प्रॉब्लम सेट में काफी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो आप प्रैक्टिस करना, सेम जैसे ही है, सिर्फ माइनर चेंजेस है, तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है।
Yes. Any other question? So any participant have any questions, then they can ask. यस मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मे बी नेक्स्ट वीक और उसके आगे के वीक में मे बी इन द सेकंड वीक ऑफ जून में हमारा जो कॉलेज है बाउंडिंग साइंस कॉलेज वो भी एक ऐसा ही वर्कशॉप करने का प्रोग्राम कर रहा है मैथमेटिक्स के ऊपर। तो आप अटेंड करना, उसमें particular topics होगा। Actually it is not a webinar but it is a course. We are going to arrange a course on particular topic। एक sequence series का course है, तो sequence series का first starting definition से लेके end तक सब कुछ कवर किया जाएगा। अगर ये sequence of functions का है तो सभी starting से लेके end तक everything will be covered। linear algebra का है तो जो भी course होगा उसमें सभी ये 5 या 6 days का course होगा, online ही होगा। तो अटेंड करना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही होगा, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज माय यूट्यूब चैनल बहुत जल्द आ रहा है। जब आप ये बाउंडिंग साइंस वाला आपने ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें भी मैं इस टाइप के वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं, तो वो भी आप देखिएगा। यस, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? સર એ જે અમે વાત કરી એનું મતલબ રજીસ્ટ્રેશન કે કઈ જગ્યાએથી મળશે કરવાનું એવું કઈ? એક વાર કોર્સ ડિઝાઇન થઈ જાય પછી એનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની ડેટ ને બધું લિંક તમને મળશે। કદાચ આ જો પ્રેમ સરે ગ્રુપ બનાવ્યું છે એ ગ્રુપમાં તમને મળી જશે। ઓકે સર। So what we will do, sir, we have made a group, WhatsApp group for all the participants. So I'm not going to delete the group right now. Once your workshop has been arranged, then you can share me the detail. I will share with all the participants. That can be done. Yes. So right now I'm not going to delete the group even after the workshop. Whenever this workshop of Bowdin College will be organized, I will share the detail with you all through that particular WhatsApp group. See, अगर क्वेश्चंस अभी नहीं है और आप बाद में प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस इज माय नंबर 9510265430। यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। हाँ, मैं रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन उसके ऊपर शेयर कर सकते हो। Yes, Prem. I think there is no more question. Okay, so I think yes. Series of functions. So I think participants have no question now. Though it is very much hard to cover any particular topic in 2-hour session, but I think the topic of this uniform convergence, particularly of function, sequence of function, has been covered very beautifully. It was covered very beautifully. It was really a very informative session, and more than 50 participants are still in this live session, and about 20 to 30 participants are watching live on YouTube also. And also the response of participants was also very good. They were giving answers. So I think this was really a great session. Thank you very much, Ethan sir. On behalf of Dr. Subhash Science College, I am really very much thankful to you for spending your valuable time and sharing your expertise in real analysis. Thank you very much, sir. Thank you, Prem sir, and thank you all the participants. Thank you, organizers, for giving me this opportunity. Thank you. Okay, so thank you all the participants once again. So again, we are going to meet tomorrow early in the morning, 10 a.m. Again, I will share the link of Zoom meeting at 9:45 in the WhatsApp group.
and all the participants are requested to join 10 minutes prior to the session. Thank you. Have a good day. Thank you.